My thriving thinkers. फ्रेंच फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट रेने देकार्त ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम. थिंकिंग, सोचना, थॉट क्रिएशन. इंसानों को हमारे क्रिएटर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉग्निटिव एबिलिटी दी है जो किसी और अर्थली स्पीशीज के पास नहीं है. थॉट्स के पावर से हमने ह्यूमन एक्सपीरियंस के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर लिया है. तो क्या सिर्फ हमारे पास इनर वर्ल्ड का एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बनाने का गिफ्ट है? इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि हमारे थॉट्स का हमारी लाइफ को शेप करने में क्या कंट्रीब्यूशन है. पावर ऑफ थॉट को समझने के लिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे आज डॉक्टर गुलरुख कपाड़िया बाला से. इस सब्जेक्ट को एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट से डिकोड करेंगे. गुलरुख जी एक असेंडेड मास्टर हैं जिन्हें स्पिरिचुअल नेम दिया गया है ज्योतिर्मा, मदर ऑफ द डिवाइन फ्लेम. ये हार्टलाइट असेंशन की फाउंडर हैं जो एक तरह का सुपरमेंटल योगा है. सुपरमेंटल बीइंग एक्सपीरियंसिंग इट इन योर एंटायरिटी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली. 25 ईयर्स से ये इस डिवाइन वर्क को कर रही हैं एज अ कंसल्टेंट, वर्कशॉप लीडर, एनर्जी हीलर एंड काउंसलर. अपने इलस्ट्रियस करियर में इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड हज़ारों लोगों को जीवन में ऊपर उठने में मदद की है और लाइफ के मैजिकल रियल्म से उन्हें अवेयर कराया है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन दैट मिस गुलरुख इज़ अ पारसी, अ कम्युनिटी दैट आई रियली एडमायर फॉर इट्स कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लेगेसी. और जिस तरह से गुलरुख जी ने अपने रूट्स को वैदिक विजडम के साथ मैरी किया है, उसे इनकी लाइफ की डिवाइन ब्लेसिंग्स में हम देख सकते हैं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक हर फॉर काइंडली ओब्लाइजिंग टू डू दिस इंटरव्यू इन इंग्लिश, जबकि ये उनकी मेन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. आई नो आप सब क्यूरियस हैं उनकी बातें सुनने के लिए, सो मूविंग ओवर टू ज्योतिर्मा. हेलो, नमस्ते. मैं हूं मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं. विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूं. हेलो गुलरुख जी, वेलकम टू विस्परिंग विजडम. What a beautiful name for your podcast, Whispering Wisdom. Thank you. Wow. Thank you, Monal, for inviting me. Thank you, God, for this opportunity that we have to spread the grace. Definitely. May this grace flow through the universal force field. Thank you. I feel so blessed to have you here today. We are all, and you, because you are the channel for this modern technology. जी. So let's start. गुलरुख जी, हम सोचना कब और कैसे स्टार्ट करते हैं? Does it take root in the womb or some time in our childhood? और thought patterns कैसे फॉर्म होते हैं? ये जो प्रश्न है मोनल, जब एक छोटा सा फीटस, एम्ब्रियो से फीटस बनता है माँ की वूम्ब में, तब 9 महीने और 9 दिन तक जो भी बाहर की स्थिति है वो सब अंदर महसूस होती है और वो फीटस में पूरी जानकारी चल जाती है. सो दिस लिविंग बीइंग इनसाइड द वूम is very aware of what is happening. Now we can call that thought process, we can call it heart process. It is really the soul process. Right. ये जो जीवित आत्मा बाहर आएगी in a शरीर, in a body, and will breathe. So what is actively happening is whatever the outer is the inner. Okay. Now the baby comes out of the womb. और आप देखेंगे डॉक्टर कभी कभी ये बच्चे को उठा के ऐसे एक थप
करते हैं on the butt. Why is that happening? Because that child has yet to make a sound. And if that child has yet to make a sound, the doctor gives a little whack. तब बाहर निकलती है आवाज और श्वास. What is in that sound? It is the breath. That is crucial for every human to understand, that it is the breath that is our driving force. And through the breath we are heart, we are thought. Therefore, what is our breath? श्वास जो है ना, breath work जो हम कहते हैं, सबसे अमूल्य चीज है. So, now the baby is on earth. The doctor has put the baby down, and the first 3 minutes, जो पहले 3 मिनट ये प्योरिटी में रहता है बच्चा. एकदम प्योरिटी, the field of divinity, of consciousness. This is the unified field where everything and everyone is just one with love. अभी क्या होता है? After 3 minutes, the first activation is sound, listening. Say an instrument falls in that room. Say 2 people are talking. There is music playing. जो भी आवाज चल रहा है वो कमरे में, ये बच्चे के कान पे पड़ते गिरते हैं और sound activates. Now, what is going to happen? Oh, sound. Process it. What was it? So now the thinking begins. Right. Your question. After 3 minutes of coming on earth, the thought pattern begins. My God. Think about it. And it stays and it builds up and it overflows and it sediments, and there are embedded billions of thoughts crowding the body in the cells. And the cells are in the body fluid. And the body fluid is so contaminated with what I call garbage thoughts. कचरा भर देते हैं हम भीतर. वो नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं. We are the biggest danger to our own selves. We are our own enemies. So thinking starts 3 minutes after being born. That was your question. There was another part to your question. Right. यही के thought patterns कैसे form होते हैं, तो आपने अभी बताया. Now, I'll give you, for a minute, I'll tell you how they become embedded. It's important to know. जी. See, एक 2 साल का बच्चा अपने कमरे में खेल रहा है खिलौने के साथ, और बाहर से रूम में a little spider enters and he is fascinated. He has never seen this little creature. And he has zero thought about anything that an adult could have, that, oh my God, to be frightened. Zero. बिल्कुल भय नहीं है बच्चे में. And the spider crawls up to the feet. Now at that moment, बच्चे की माँ रूम में आती है और चिल्लाती है स्पाइडर, और उसको मार देती है. अभी दूसरे दिन भी ये होता है, the same situation. And on another day, the next week, another spider, and the same. So when a situation is repeated thrice, it forms a pattern, a thought pattern, registers. What will this little baby learn for life? Oh my God, spiders have to be killed. Now in the world we see there are so many who just allow spiders to roam in their home. Because have they had that experience with a parent? Zero.
तो आप यहाँ पे देखते हैं पूरी तरह के अपने पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है in perpetuating their beliefs from their ancestors. Right. It is dangerous. It is very dangerous. Yeah. The spider example just reminded me of something that my son had said. Sometimes there are spiders which come into our bathroom. तो वो मुझे बोलता था स्पाइडर को कुछ मत करना, मैंने उससे मेरा बाथरूम रेंट पर दिया है. I love That's it. the creativity of children. Yeah, I love it. हम सब अपने लाइफ कंडीशंस के बेसिस पर एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं. We hold some beliefs about every area of our life. ये बिलीव्स स्पेशली क्या रोल प्ले करते हैं हमारे थॉट्स और अल्टीमेटली हमारे आउटलुक को शेप करने में, और लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स कैसे होते हैं, अभी एक उदाहरण तो हमें मिल ही गया. भी पूरी जिंदगी बच्चा तो उधरता रहता है, स्कूल जाता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स रहती है, till a child is 7 years. That child is a sponge. What is the work of a sponge? To absorb. So this child is absorbing everything it sees, it hears, and what is being done. The thoughts, words, and actions around the world of a child form the world of a child. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, we are not what we think we are. What we think we are. Right. It's the same, but just how we see it changes everything. Yeah. How we think. हम क्या करते हैं, अभी बचपन से देख रहे हैं बुजुर्ग लोगों को घर में दादा दादी है, नाना नानी है, रिलेटिव्स आते हैं, फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे सब जगह जाते हैं. बिलीफ पैटर्न्स तब फॉर्म हो जाती है. तो अभी अगर आप अमीर घर के बच्चे हो और अभी आपके कोई फ्रेंड थोड़े दूसरे लोअर इनकम ब्रैकेट में आपको बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, तो उधर you will see a difference in attitude sometimes. Sometimes a child who is a single child without siblings, there is a tendency to be very arrogant and selfish. Unless the parents have broken that tendency the moment they see it. Right. So these are belief systems, you know. We dress this way, we talk this way, we go to this restaurant. ये सब अंदर का कचरा है. Now simultaneously there is zero link with the heart. These thoughts are damaging thoughts for the life of the person. There is a unified field of consciousness where the universe works in harmony, in integrity, integral, bringing together. That force field has to be inculcated बच्चों में. मुझे लगता है ये जो रूडोल्फ स्टाइनर स्कूल है, मॉन्टेसोरी स्कूल है, ये स्कूल बच्चों को रखनी चाहिए. माँ बाप को यहाँ बच्चों को डालने चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरा जहान का जो भी है, it is given to them fully and they can choose. Choice is a very big thing. It's the biggest thing. Yes. Somehow कुछ ऐसे हो रहा है, since a few days I'm attracting everything related to Rudolf Steiner. Look. And you also mentioned him, so I mean I became aware of him only since the last month, और तब से कुछ ना कुछ मुझे वैसे ही मिल रहा है. And I'm so happy that my son is also getting a chance to go to this school in Bali which is called Green School, जहाँ पर नेचर के साथ
oneness experience बच्चों को कराते हैं. Yes, yes. I feel so blessed that he is getting this opportunity. Absolutely, my dear. बाली एक ऐसी जगह है जहाँ जो भी जाए आपका बिल्कुल जिंदगी का पूरा परिवर्तन बदल जाता है. वहाँ आप आएंगे, एयरपोर्ट के बाहर ही लिखा है बहुत बड़े शब्दों में, This will change your life forever. अच्छा. सच्ची बात है, सच्ची बात है. वहाँ का माहौल, मैं आपको बताऊं, मैं और मेरी बेटी वहाँ बीच पे थे कई साल पहले, और वहाँ जैसे यहाँ बॉम्बे में चौपाटी बीच पे वो मालिश वाले, जब हम छोटे थे तब, अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है ऑन दैट बीच, पर मालिश वाले आते थे और they would pester you to do a malish, a tail malish for the head or something for the legs. So here comes a man and we are sitting on the beach and he just offers a massage, an oil massage, while walking by, and we decline, and he keeps walking. He hardly looks back and there is zero asking us again. And I was quite stunned by that. So we had our guide with us and I asked him later, I said, what is this? He says that in Bali, now remember, our Vedic roots have spread all over the world. Bali देखो, सिंगापुर देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देखो, मैं सब जगह गई हूँ और अपनी आंखों के देखने से और सुनने से पता चला, these are our Vedic roots. So he said, and even the guide's name was Alit Krishna. So I asked Krishna, I said, what is this? He says, we are trained in school and at home on the law of karma. Oh. And we take the law of karma very seriously. How wonderful. Look at that thinking now. Look at that. The whole place thinks like that. We wanted a certain dish for our afternoon lunch. We went to a restaurant. They said they have it frozen. And I said I would only like fresh. So the lady kindly pointed out, she says, go to this restaurant next door. Now, would this happen anywhere else? Amazing. यही बिलीफ सिस्टम एंड कर्मा कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये क्लियरली ये दिखाता है. एक भी गरीब नहीं, एक भी भिखारी नहीं. वो बोला मुझे कि एक भी चोर नहीं, साफ साफ साफ. ऐसे कल रात मुझे एक गरीब दिखाई, वो बोला वो बाहर से आया होगा, हमारे वहाँ का नहीं होगा. अच्छा. That is how Bali is. I feel everyone should save money and go to Bali. Yeah. Wow. These things even I didn't know. Somehow कैसे एक से दूसरी चेन लिंक होकर बाली की बात निकली, and even I learned so much about the place. Yes, your son is blessed. Very blessed. गुलरुख जी, आपने लिखा है, our worlds hold zero meaning without experience. और experience एक collective expression है thoughts, emotions और actions का. तो इन तीनों का क्या रिलेशनशिप है आपस में? उनके इंटरप्ले से लाइफ कैसे बनती है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका. सबसे पहले, the root is the thought. जो थॉट हम उत्पन्न करते हैं, जो विचार, सद विचार, वो विचार को हम अंदर अंदर रखते हैं. वी प्ले विथ इट, वी पॉन्डर ऑन इट, और वही विचार के फिर शब्द निकलते हैं मुंह से. अलाइंड, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट विथ योर थॉट. वही शब्द से वी विल एक्ट. Now, when we look at the great, good people of the world, and then we can also look at the other side. ये लोग के सद्विचार
हमेशा रहते हैं, कैसे हम अपने अंदर ही भीतर, the work is all inside. How can I be my best self? Every morning when we wake up, may I engender the best choice in thought. Now, here I want to state, it is only when we link the heart breath, the breath of the heart light, and ascend into our thought, and we link up, then that thought is always the best thought. You see. पर हम तो जल्दी जल्दी उतावल है, क्या कहाँ भागना है, 40-hour week में क्या मिल रहा है आपको, जिंदगी लंबी है, जिंदगी को बहुत एंजॉय करनी है, रिलैक्स करना है, नहीं बस कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। तो कहाँ जाके गिरते हैं, अस्पताल के बेड पे, या कुछ अकस्मात हो जाता है, या कुछ चोरी चपाटी हो गई है, सब चला गया, सब चल। कैसे ये सब होता है? ये ऐसे ही नहीं होता है, ये हमारे विचार के कॉन्सिक्वेंसेस विचार में ही है। We are making the bed and we will lie in it with that one thought. Right. Shri Aurobindo कहते हैं, one king thought can change the course of things. One king thought. Right. So we have to be very careful of this field of thinking, which is a gift, as you mentioned in the beginning. Humanity has been given, we are the crowning glory of nature. We have been given free will and choice. भी भगवान को लोग दोष देते हैं, भगवान को चिल्लाते हैं, भगवान से नाराज होते हैं। भगवान कहते हैं, I am in all. मेरा जो तत्व है, the श्वास, the life breath, the essence, परमात्मा की शक्ति, आत्मिक शक्ति जो हम में है, I am in all. How you use it and you create your karmic wheel. भगवान के zero of you are in me. I am in all, zero are in me. Right. Come to that purity of thought. You see, बहुत कठिन है. It's a step by step, but rather than feeling overwhelmed, कैसे होगा, मुझे करना है, कैसे होगा. अभी देखो ये जो नया मूवी आया है, 12th Fail. I watched that movie. This child learned, the protagonist, he learned from that one gentleman officer who said, cheating chhod do. That's all he said to him. Cheating chhod do. The thought about wanting to win through a corrupt way. That thought, if बहुत परिवर्तन आ जाएगा, if we can all leave cheating in little things. Right. In little things. So that thought is very important, darling. What we think we are. Yes. We are not what we think we are. कि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, मेरे पास वॉल्वो है, ये सब जाने दो. अंदर की सोच वो आपको बनाती है. So true. They also say that thoughts become things. तो क्या physical matter पर भी इसका effect होता है? Like are there changes in our body, in our environment and all? उसमें भी changes आ सकते हैं. Inner world की alchemy से outer world की alchemy कैसे alter होती है? Can you explain this? Yeah. जब एक thought आ जाता है, one thought, आप लोग सब ध्यान से सुनो, has more than nuclear power. One single thought has more than nuclear power.
आप उसे रखो, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है. पूरा यूनिवर्स receives your message, your whisper, and there is a buzz in the entire universe. ओ मोनल को ये करना है, ये बनना है. तो सब universal energies of divine integration come forward to help the person to fulfill that thought, and the person gets it. You see, आप कोई भी लोग की हिस्ट्री में देखो, ये बिल्कुल हो जाता है. एल्केमी जो कहते हैं वो. मेरी लाइफ में तो हर घड़ी हर पल ये हो रहा है. अभी कितने from 50 years, you know. जो भी कठिन है, ओके, इस पे आप change the thought, bring this higher thought and be with it. Night and day be with it. इंडिया में तो हमारा जो कल्चर है हजारों साल पुराना, हमारा कल्चर जो है अभी साइंस इज प्रूविंग इन द वेस्ट. राइट. आपको एक लाफिंग मैटर बताऊं. हम हमारे कपड़े बाहर सूरज में हवा से सुखाते हैं धो के. सिंपल. अभी यहाँ क्या हो रहा है इन द वेस्ट? देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी of sun and wind to dry the clothes. मैं तो इतनी हंसी के बोलो मत. कुछ न्यू नहीं है. So what the thought is, and we change the thought and remain simple, beloveds. All of us who are listening in, remain pure in the simplicity of our higher mind. We have a higher mind, all of us. हम सब ऊंचे लोग हैं, पर हम सब भूल गए हैं और dim consciousness में ही रहते हैं. Right. You see? So how do you manifest? Now, everything I realized many, many years ago, everything in the house has energy. Your table, your chair, your linen, your towel, your soap, you're cooking your vegetables, the pan, the stove, sab. And we, with dim consciousness, say they are inanimate objects. Sorry, they are full of life. They have their own force field and they receive our energy. Look, manifestation आप पूछते हैं. अगर एक आदमी क्रोधित है और वो क्रोध के विचारों में है और वो खाना पकाता है, वो बर्तन टेबल पे लाने वाला है और वो गिर जाता है, टूट जाता है. And फिर the words he will use are all of those words which I refuse to use. He'll say, oh, that it happened. Oh, that to your thought. You see? What were the thoughts that it happened? What are the thoughts that went into? The thoughts they walk before you and they create the reality. Accidents. Look at accidents. Look at ailments. मैं ये बहुत deep workshops देती हूँ on this. अभी आप देखेंगे diabetes जो होता है in the pancreas. Now that organ in the body is meant to level the sugar levels in the bloodstream. And that sugar levels, the sweetness of the body is maintained when we maintain the sweetness of living, the joy of living, the happiness in however small that situation is, but to remain celebrating it and thanking it and gratitude. जब ये छोटी छोटी चीज चले जाती है लाइफ से, what happens is the sweetness of life diminishes. घर में घर का माहौल छोटे बच्चे को होता है. जुवेनाइल डायबिटीज कैसे होता है? कुछ है, चल रहा है बच्चे के दिमाग में, बाहर का माहौल बदलना चाहिए. So then the body, the pancreas says, every body part
takes a thought pattern, remember. Hmm. So the pancreas tells the mind, I'll take this thought pattern. So the pancreas is taking the thought pattern of losing the joy of living. So the sweetness diminishes, and then the body cannot handle the sweetness has diminished, and there is what the condition is called diabetes. Dekha? In every thought, when you build it up, therefore I say pattern interrupt. The moment we know we are following a negative path, sit down quietly every day, even for 5 minutes, and interrupt that pattern. Right. जैसे एक स्लाइड शो होता है पुराने जमाने, अभी मैं कहती हूँ पुराना जमाना, आप लोग के जमाने में नहीं है. I have seen it when I was very young. मैंने देखा है. स्लाइड्स बदलती जाती है. अभी सूर्यास्त है, अभी सूर्य आ रहा है, अभी शाम हो रही है. Slides are moving. So when there is a dismal thought, a thought of negation, a thought of cruelty, a thought of revenge, of greed, of anger, catch the thought and change the thought. There is great magic in that. Interrupt the pattern of ancestors. I think this is the biggest gift that we can give to our ancestors as well. Yep. Clearing it out. Yep. Yes. Because हम सोचते हैं कि वो चले गए तो उन पर इम्पैक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है. It still impacts them. Yes. And जो भी चेन ब्रेकर होगा, जो पैटर्न को इंटरप्ट करेगा, वो सबके लिए हेल्पफुल है. खुद के लिए तो है ही, वी डोंट रियलाइज, हमारे एंसेस्टर्स के लिए, हमारे प्रोजेनीज के लिए, सबके लिए हेल्पफुल है. बट हाउ कैन वी easily break these patterns? Because we are so, हम इन पैटर्न्स के इतना अंदर रहते हैं कि हम उनको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते. तो अवेयरनेस कैसे ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं? Only by making 5 minutes alone time. There is this one way. आप पूरी जगत के देखो, जो sages है, philosophers है, सब चुपचाप अंदर बैठे हैं. It is an inside story. It is an inner work which we have to do. We have to do our inner life. This outer life keeps going on. Yes, we have a job, we have a family, we have to take care of the home, we have to take care of our elders. That goes on relentlessly. But उसके साथ मैं बहुत छोटी थी और मैंने देखा कि there is a parallel life. And that parallel life is inside us. The joy we feel when we sit with our library book, the joy this little girl feels when she practices her piano lesson, the joy she feels when she's planting a rose which her father gave her a pot and she's only 5 years old. ये हम में उत्पन्न होता है, जागृत होता है अंदर की कहानी जो है. और आज की दुनिया में ये कहानी बहुत जरूरी है. Start our inner work, however tiny. Go with the hobby, go with the passion and inculcate it within. Whatever the parents may have said, you have to be a doctor, you cannot be a stand-up comic, you have to be an engineer, you cannot be an artist. Let that go and become. At 70, start painting. At 80, start gardening. Wonderful. ये भी तो एक बिलीफ ही है. हम सोचते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद हम कुछ चीज़ नहीं कर सकते, या इवन दिस थिंग यू नो कि विथ एज वी विल गेट फिजिकल कंडीशंस, यू नो हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी ही. ये भी एक बिलीफ सिस्टम है और एक पैटर्न हमारे माइंड में बन गया, बिकॉज वी हैव सीन दैट हैपनिंग मोर ऑफन. We can break that pattern as well. It's up to individuals. You're very right. It's up to the individual. ये बिल्कुल नहीं होगा. मेरी जिंदगी में एक
ऐसा टाइम था जब मैं किसी के ड्राइववे में, बहुत स्नो था, मैं वहां गिर गई और मेरे घुटने में it got affected and there was swelling and pain. So ये लोग मुझे बोले जिनका घर था कि चलो हम MRI करें. ये 10 साल पहले की बात है. तो गए, MRI में कुछ दिखाई दिया. And the lady was a doctor herself. She said, "Oh, now Gulrukh, for the rest of your life you'll have to be living with this dangling thing inside your knee." And the moment she said that, that was her belief. Listen carefully. The moment she said that, in my head and heart, I said, absolutely zero. I will be well in a year. And I was on it. And of course, I had to do my yoga. I had to do whatever inner work I had to clear that feeling in my knee. And the knee is robust. अभी ये जो हम पे जिम्मेदारी है from the universal light that we are supreme beings of light and we can exercise that in every breath. ये ही अगर हम जागृत रखते हैं हम में and work with that and stop listening to anything else. That's when there are zero ailments and there is longevity. Right? Right. I think there is nothing which is not possible with the power of thought. We are light. We should wake up and we should sleep with gratitude, appreciation, and I am that light. And that is enough. Just say that 3 times. I am Atmik Shakti, and that is enough. I am Paramatma ka ansh, and that is enough. And live with that. Everything else, throw it away. Throw it away, like we say, declutter, na? Kitchen को declutter करो, bedroom को declutter करो. अपने आप ही अंदर का भी declutter हो जाएगा. देखो, आसान बन जाएगा. So beautiful. अच्छा गुलरुख जी, आपने इस पाथ में जैसे थॉट को लेकर मिसकंसेप्शंस भी नोटिस किए हैं? जैसे कि कोई मिसकंसेप्शंस, यू हैव कम अक्रॉस एनी मिसकंसेप्शंस? अभी जैसे हमने बात की कि लोग सोचते हैं ये हो ही नहीं सकता जी, ये जैसे मिसकंसेप्शन होता है, तो कुछ और भी एनी अदर मिसकंसेप्शंस यू हैव कम अक्रॉस? ओके, बहुत सारे हैं. अमीर लोग कहते हैं हमारे पास तो नहीं है पैसा. I don't have the money. I don't have the ability. I don't have room in my house. कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, मेरे पास जगह नहीं है. तो what are we bringing into motion? We are hurting our light. आत्मिक शक्ति को ठेस पहुंचती है बिल्कुल. Dim consciousness, or we are one, we are all one. We have forgotten we are all one. That hurt reaches that relative who wanted to just come for a day and was passing through your city and requested if I could come for the day, and that relative was declined. I have no room. तो ये एक misconception है. कभी कभी जैसे कोई गुजर गया, आपने उनके बहन को फोन किया, वो कहती है मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पैर में दर्द है. नाउ लुक एट दिस, इतनी बड़ी चीज हुई, उनकी बहन गुजर गई और वो अपने पैर की सोचती है. Am I answering your question? I guess so. अच्छा गुलरुख जी, जेन्युइन पॉजिटिव थिंकिंग और टॉक्सिक पॉजिटिविटी में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? When you say toxic positivity, टॉक्सिक पॉजिटिविटी यानी फोर्स्ड पॉजिटिविटी, जैसे आप अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं बट ऊपर से आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं पॉजिटिव रहने के लिए. और एक होता है जेन्युइनली आप हाथ से और थॉट से पॉजिटिव फील कर रहे हैं. सो दैट इज जेन्युइन. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कोई
बर्थडे हो और बिल्कुल खुश हैं, और बच्चा इतना खुश है कि आज मुझे बलून्स, कार्ड्स, गिफ्ट्स, मम्मी डैडी का प्यार, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, केक होगा, मिठाई होगी. That is genuine happiness from within. Now, remember earlier I spoke of a child who has only no siblings. So I have seen this forced toxic positivity in school itself, and the teachers remarked to the parents to change it in the child. Okay? कोई भी बच्चे का बर्थडे हो और सब बच्चे खुश रहते हैं, they sing for that child, the child cuts a cake. पर ये एक बच्ची forced toxic positivity में भी नहीं आ सकी. आप सोचो उसका क्या अंदर का ट्रेनिंग था from her home. Only you matter. Only you are the princess. कोई का बर्थडे मैं नहीं सेलिब्रेट करूंगी. That is one end of the spectrum. And you come closer to toxic positivity. कितने बच्चे होते हैं? I understand what you're saying. There is envy. इसको सब मिल रहा है. ये तो बुढ़ापे तक रहता है. ये पैटर्न्स कोई बदलते नहीं है लोग. बहुत कम लोग ये पैटर्न बदल सकते हैं. ओ इसको अवार्ड मिला, ओ उसका बेटा डॉक्टर हो गया, मेरा बेटा तो मैकेनिक है. और पर when they're invited for that evening, they put on that toxic positivity. Right? It's called a mask. Yes. But under the cells are being eaten up. Now, that is a lack of love. When you are unable to love your spirit, which is in all. Paramatma sab mein hai, Shakti sab mein hai. When we share our love, it expands. जैसे आप घर पे मेहमान बुलाते हैं of another community और अपना इंडियन खाना पकाएंगे और ये लोग बोलो स्विस है, स्वीडिश है, इतने मजे से खाते हैं. जब जाते हैं तब हम सब कहते हैं वाह इन लोग को कितनी खुशी हुई हमारा खाना खा के. And because we shared and they shared their joy of eating. अलग भी हो सकता है. Right? Right. Thank you, Gulrukh ji. I mean, this was a very enlightening conversation. Thoughts का हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट इतना डीप है, इसका एक नए लेवल का रियलाइजेशन हुआ है मुझे. मैं खुद भी अब से ज़्यादा अवेयरनेस रखूँगी अपने थॉट्स के वर्ड्स और इमोशंस पर. मुझे ये समझ में आया कि थॉट्स आर लाइक सेल्फ टॉक. आप दूसरों से बातें करते हैं और थॉट्स वो हैं जो आप खुद से बातें कर रहे हैं. सो आई विल ऑल्सो बी मोर केयरफुल अबाउट वॉट एम आई सेइंग टू माई सेल्फ ऑल द टाइम. आई मीन हम दूसरों से तो बहुत कम बात करते हैं, खुद से तो कॉन्स्टेंटली बात करते ही रहते हैं. और उसमें से आधी चीजें आर वेस्ट, यूजलेस. So, it is said that there are 65,000 garbage thoughts in every person every day. Oh my God. एक का एक. अभी देखो एक इतना बड़ा दुनिया का एक्टर बड़ी बैंक्वेट में था, मैं आपको बताऊं, और इतना उसको प्रेज मिला, सम्मान मिला, वो इतना खुश हुआ 2 घंटे के लिए. अब जब बाहर निकल रहा था तो one lady at the door who was an usher remarked on his nose and said, I think you should get plastic surgery done for your nose. That's all. 2 घंटे का पूरा मान सम्मान खुशी सब चला गया. And for the next hour he was only on that one thought. Think about it. We only capture, we've got this pattern which we need to throw away, to delve and only be and dwell on negatives. Right. Therefore, we need to raise our children up, raising them up, from the womb. That's with your first question. जो माँ बाप का घर में है माहौल, वो बहुत असर करता है on the womb.
राइट। तो मुझे ये समझ में आया, थॉट्स आर लिटरली लाइफ। सो थैंक यू गुलरुख जी, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस शो विथ all your wisdom. This is simply wonderful. Thank you, my darling girl, and may it spread to all the corners of your world, and may you be flourishing with this work. Amen. Amen. I was also going to just say amen. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।